Good morning, all of you, my dear student. Welcome back. 3 days back, I taught you the summary of the chapter, the last lesson related to flamingo book, English, in Hindi as well as English. Today, I will teach you the question answer related to the same chapter. Question number 1. Franz did not want to come to school that day. Franz did not want to come to school that day. Franz उस दिन स्कूल नहीं आना चाहता था. क्यों? Gas card your few ideas. अपने विचार बताइए. Franz did not want to come to school that day, and he wanted to return back from there by seeing the sawmill as well as the Prussian soldier drill, and did not want to come to school that day because he knew very well that if he goes to school, he will be punished by teacher Mr. Hammer. क्योंकि Mr. Hammer, because he did not know even a single word of the rules and regulation of participant, and on coming to school, Mr. Hammer, the French teacher, definitely asked him the question answer related to the rules and regulation of participant. So therefore, he wanted to return back from there to his house, and he did not want to come to school that day. My dear student, फ्रांस स्कूल उस दिन क्यों नहीं आना चाहता था? अपने विचार बताइए. अब मैं इसको हिंदी में बताता हूँ. फ्रांस स्कूल इसलिए नहीं आना चाहता था क्योंकि उसको पार्टिसिपल के रूल्स और रेगुलेशन पार्टिसिपल के याद नहीं थे, और वो अच्छी तरह से जानता था अगर वो स्कूल गया तो उसको पनिश किया जाएगा, क्योंकि स्कूल जाने के बाद उससे पार्टिसिपल के रूल्स और रेगुलेशन पूछे जाएंगे जिनको टीचर मिस्टर हैमल बहुत दिन से पढ़ा रहा था, जबकि उसको तो उसके बारे में पार्टिसिपल के रूल्स रेगुलेशन तो बहुत दूर की बात रही, उसके बारे में तो उसको एक शब्द का भी पता नहीं था. लिहाजा वो वहीं से ही प्रूशियन सोल्जर ड्रिल और ग्राइंडिंग मशीन को देख के ही वापस अपने घर पर लौट जाना चाहता था. ये था इसका हिंदी जो मैंने इससे पहले आपको इंग्लिश में बताया. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. एज फ्रांस गॉट एंटर्ड व्हाट ही सॉ. जैसे ही फ्रांस स्कूल कैंपस के अंदर घुसा तो उसने क्या देखा? एज मिस्टर फ्रांस गॉट एंटर्ड इन द क्लासरूम, then he also saw a crowd standing around the bulletin board. When he passed near the town hall, he also went there and he read the news on the bulletin board that for last 2 years the bad news was coming, and today our army has been defeated by German army, and it has been possible because of the weakness of commanding officer. In this defeat, German army took Alsace and Lorraine, 2 cities, from French army, and due to this he was very upset. My student, जैसे ही फ्रांस स्कूल कैंपस के अंदर गया और वो टाउन हॉल के पास से जा ही रहा था, तब उसने अचानक बुलेटिन बोर्ड के चारों तरफ एक भीड़ देखी. वो खुद भी वहाँ पे गया
और उसने बुलेटिन बोर्ड में पढ़ा कि पिछले 2 साल से बहुत बैड न्यूज आ रहे थे। उन बैड न्यूज में एक न्यूज आज ऐसा भी था जिसमें फ्रेंच आदमी को हरा दिया है जर्मन आदमी ने, और इस हार में फ्रेंच आदमी को अल्सेस एंड लॉरेन 2 शहर गंवाने पड़े। यानी कि अल्सेस एंड लॉरेन दोनों शहर जो कि फ्रेंच आदमी के अंदर थे, यानी कि फ्रांस के अंदर थे, वो जर्मन आदमी ने जीत लिए हैं, यानी अपने कब्जे में कर लिए हैं। और जैसे ही उसने ये न्यूज पढ़ा, इससे उसका दिल बहुत दुखी हुआ। So it was in Hindi. Now come to question number 3. He was surprised as he saw Mr. Hamel. जैसे वो बहुत सरप्राइज हुआ जैसे उसने देखा मिस्टर हेमल को और विलेजर्स को सिटिंग ऑन लास्ट बेंचेज ऑफ द क्लासरूम, जो कि क्लासरूम के लास्ट बेंच पे बैठे हुए थे। कमेंट व्यूज, अपने विचार बताएंगे। वो सरप्राइज क्यों था? एज फ्रॉम देयर from bulletin board, as he went ahead, then he saw Mr. Hamel standing at the gate of the classroom. He was surprised by seeing that Mr. Hamel was wearing such a uniform that he used to wear always in prize distribution day or annual function day. Then, what is the matter today that he is wearing the same uniform today? In uniform, he was wearing beautiful green coat, frilled shirt, and black cap, along with black goggle and tie. Then he got entered in the classroom. As soon as he got entered in the classroom, once more also he was surprised by seeing that some villagers were also sitting on last benches of the classroom. And the villagers were as old Hosal, former mayor, former postmaster, and other villagers who were famous of the village were sitting on the last benches of the classroom. Because the villagers sitting on the last benches wanted to see Mr. Hamel once more also as last campus, because Mr. Hamel had completed his 40 years of service in that school as French teacher, and today he was leaving this school forever, because Alsace and Lorraine, 2 cities, had been captured by German army, had been taken by German army in its command from the French army, and it was possible because of the weakness of commanding officer. Also, they wanted to see Mr. Hamel's French language once more also, because they knew very well that after today nobody else will be available there in that school in order to teach French language any longer. Our student, he was surprised as he saw. वो सरप्राइज इस ऐसे हुआ, आश्चर्यचकित हो गया जैसे ही वो बुलेटिन बोर्ड से आगे बढ़ा तो उसने क्लासरूम के गेट पर मिस्टर हैमल को खड़े हुए देखा, और मिस्टर हैमल एक ऐसी यूनिफॉर्म पहने हुए थे जो यूनिफॉर्म हमेशा या तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे में पहनते थे या एनुअल डे फंक्शन में पहना करते थे। और आज इस दिन इसी यूनिफॉर्म में वो एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए थे, हेल्ड शर्ट
यानी कि झालीदार शर्ट पहने हुए थे और काला और ब्लैक कैप और काली कैप सिर के ऊपर पहने हुए थे। इतना ही नहीं बल्कि वो काला चश्मा भी पहने हुए थे और टाई पहने हुए थे। वो ये यूनिफॉर्म थी जो कि हमेशा एनुअल डे फंक्शन या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे में पहना करते थे। आज ऐसी क्या बात थी जबकि वो उसी यूनिफॉर्म को पहने हुए हैं, जबकि कोई ऐसी बात नहीं थी। ना तो एनुअल डे फंक्शन था और ना ही प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे था। नंबर 2, वो आश्चर्यचकित यूं भी हुआ क्योंकि उसने बहुत सारे विलेज गांव वालों को अपनी क्लास के पीछे वाली सीट पर बैठे हुए देखा, जिसमें शामिल थे ऑल्ट होशर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर और बहुत सारे गांव के मोजिज लोग जो कि फेमस थे। वो इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि वो उनको पता था इस बात का कि आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जाएगी, कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और आज से लैंग्वेज आज ही फ्रेंच लैंग्वेज खत्म हो जाएगी। वो एक बार और फ्रेंच लैंग्वेज को सुनना चाहते थे मिस्टर हेमल से, क्योंकि मिस्टर हेमल पिछले 40 साल से फ्रेंच लैंग्वेज ही पढ़ा रहे थे। उनको पता था ना तो आज के बाद मिस्टर हेमल उनको मिलेगा टीचर और ना ही फ्रेंच लैंग्वेज उनको मिलेगी। और तीसरी बात, वो उसको आखिरी झलक के रूप में भी एक देखना चाहते थे, क्योंकि जो व्यक्ति वहाँ पर 40 साल पढ़ चुका था तो वो उसको एक बार और देखना चाहते थे, ये सोच के कि उनको वो उसको आज के बाद नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कल से जर्मन टीचर आ जाएगा और वो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएगा अगले दिन सुबह से ही। ये बात सुनकर वो आश्चर्यचकित हो गया। Now come to question number 4. What was said by Mr. Hamel in his last speech? As soon as Mr. Khan took seat and all the students took seat, then Mr. Hamel left the chair and also started to address the student as well as all the villagers sitting on last benches of the classroom. That I have completed today 40 years as French teacher in this school, but today I am leaving this school forever, and after today I will not come back here as French teacher, because this school location comes under Alsace, and Alsace and Lorraine, both of the city are such which have been won by German army by defeating the French army, and it has been possible because of the weakness of commanding officer. I will quit the school forthwith, and tomorrow morning the German teacher will come here and he will start to teach you the German language, because the school location has come under the command of German government. By saying this all, Mr. Hamel left his speech and sat down on the chair. My dear student, जैसे ही मिस्टर हेमल क्लासरूम में पहुंचे, उन्होंने वो खड़े हुए और उन्होंने अपना भाषण शुरू किया, ये कहते हुए कि प्यारे दोस्तों और प्रिय गांव वालों, मैं आज इस स्कूल में एक फ्रेंच टीचर के रूप में 40 साल पूरे कर रहा हूँ, और मैं आज इस स्कूल को हमेशा के लिए अलविदा कह दूँगा, क्योंकि ये स्कूल अल्सेस के अंदर आता है, अल्सेस सिटी के अंदर,
और अल्सेस एंड लोरेन दोनों शहर जर्मन आदमी ने हमारे फ्रेंच आदमी से जीत लिए हैं। यानी कि ये स्कूल जर्मन गवर्नमेंट के अंडर जा चुका है और कल यहाँ पर जर्मन टीचर सुबह ही सुबह आ जाएगा और वो जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाना शुरू कर देगा। लिहाजा आज मैं इस स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। जैसे ही उसने ये बात कही तैसे सारे गांव वाले और सभी स्टूडेंट बहुत दुखी हुए, चिंतित हुए, ये सोच के कि जो एक टीचर 40 साल से यहाँ पढ़ा रहे थे, फ्रेंच टीचर, फ्रेंच लैंग्वेज, वो उन्हीं की भाषा, उन्हीं के देश की भाषा को पढ़ा रहे थे, आज वो भाषा हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी। इस बात का उनको बहुत दुख था। Now come to question number 5. What Mr. Hamel said to Franz after the speech was over. As soon as the speech addressed by Mr. Hamel was over, then he said to Mr. Franz that, oh my dear Franz, I taught you the rules and regulations of participating in a proper way and more than other students. All the students have understood the rules and regulations of participating in a proper way, while it is you only who is unable to understand the rules and regulations of participating. I do not know what the reason not to know, but I can say surely that I did not also send you at my home to give the water to the flowers and plants. I also recommended you leave when you demanded. And your parents did not also want to teach you, but your parents did not want to teach you, but I came ahead because I wanted to make your future right. In spite of it also, you are not aware about the language of your own nation. And a person who is not aware about the language of his own nation, that means he is just like a prisoner for that country. And he is inside the jail. Also, the key of the jail is inside his pocket. After wanting also, the prisoner cannot open the lock of his jail. In the same way, you are also in the same category. You cannot learn the rules and regulations of the participant. While you can know them properly if you want. So your condition is just like the prisoner. By saying this all, Franz was afraid. जैसे ही मिस्टर हेमल का भाषण खत्म हुआ, वैसे उन्होंने फ्रांस को बताया कि मिस्टर फ्रांस, मैं आपको ये लैंग्वेज और साथ ही रूल्स एंड रेगुलेशन पार्टिसिपेट के बहुत दिन से पढ़ा रहा था। सभी बच्चों ने हिस्सा लिया, सभी ने सीख भी लिया, लेकिन तुम एक अकेले ऐसे थे जो नहीं सीख पाए। वो भी तब जब मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की, आपके साथ बहुत ज़्यादा साहस दिखाया, मेहनत की, इसके बाद भी आप सीख नहीं पाए। जबकि आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन मैं आपके भविष्य के होने के नाते मैं आगे आया और मैंने आपको ये लैंग्वेज सिखाई। जबकि मैंने आपको फूल पौधों के बारे में, पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेजा, ना अपने घर पे काम करने के लिए भेजा, और ना ही मैंने आप ऐसा भी नहीं था कि मैंने आपको छुट्टी नहीं दी, छुट्टी भी दी, इसके बाद भी नहीं सीख पाए। और वो इंसान जो अपने देश की भी लैंग्वेज नहीं सीख पाता, वो एक कैदी की तरह है। जिस तरह से कैदी अपनी जेल में होता है और जेल की चाबी उसकी पॉकेट में ही होती है, और वो चाहकर भी
उस जेल का ताला नहीं खोल सकता, उस तरह से आपकी कंडीशन भी थी। आप चाहकर भी इसको सीख नहीं पाए, आपकी हालत इस तरह से थी। Now come to question number 6. Describe about the school's environment that day. As soon as the statement of Mr. Hammer with Franz was over, then Mr. Hammer first of all gave the work of grammar, and now today Mr. Franz also learned about grammar in a proper way, along with rules and regulation of participle. And he was also very happy, very surprised, very happy, very pleased in order to know that whatever the language he was unable to learn the whole of the year, the same language he has learned within some moment. And he was very happy. Then some written work was given to them. When he was also attending the written work, then the environment of the school was very silent. The walls of the school was also completely decorated from all the sides, as the flag of the country, France, were also hanged on the wall of the school from all the sides. In classroom, environment was very silent and no sound was coming. Every day, the pigeon used to quee, used to speak loudly, but today, no sound of the pigeons was coming inside the school, inside the classroom. The sound was coming only by scratching of the pen of the student only. And then some history question were also asked to the student, and all the students also solved the history question in a proper way, without facing any problem. जैसे ही क्लास शुरू होने में मिस्टर हैमर ने सबसे पहले ग्रामर का काम किया सारे बच्चों को, और ग्रामर का काम में सबसे पहले फ्रांस सीख किया। और फ्रांस आज बहुत इस बात को देख के बहुत खुश था कि जो चीज़ वो पूरे साल नहीं सीख पाया, वो चीज़ उसने एक थोड़ी सी देर में ही सीख ली। इस बात को देख के बहुत खुश था। और इसके बाद फिर रिटन वर्क दिया गया। रिटन वर्क में भी उसने अच्छा किया। अब रिटन वर्क में कोई आवाज़ बाहर की नहीं आ रही थी। वातावरण स्कूल का भी बहुत शांत था और क्लासरूम का भी बहुत शांत था। अगर बाहर की बात करें तो बाहर सारे झंडे लगे हुए थे, दीवारों पे स्कूल सजाया हुआ था, क्योंकि मिस्टर हैमर को सम्मान देना था, क्योंकि आज वो 40 साल सर्विस एक फ्रेंच टीचर के रूप में पूरा करके आज वो हमेशा के लिए स्कूल से विदा हो रहे थे। उनके सम्मान में स्कूल को बाहर से सारी बाहर की दीवारों पे फ्लैग लगा करके फ्रांस के फ्लैग लगा करके सारी दीवारों को सजाया हुआ था। और अब क्लासरूम के अंदर भी वातावरण बहुत शांत था। जब हमेशा कबूतर बहुत जोर से बोला करते थे, आज कबूतरों की एक भी आवाज़ नहीं आ रही थी। वातावरण इतना शांत था कि कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अगर कोई आवाज़ थी तो सिर्फ स्टूडेंट के पेन के चलने की आवाज़ थी, इसके अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। और ये रिटन वर्क भी बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से किया, जिसमें नंबर 1 फ्रांस ने अच्छा किया। नंबर 3 पे आया हिस्ट्री क्वेश्चन बच्चों को दिए गए, और सारे हिस्ट्री क्वेश्चन बच्चों ने एक ही बार में हल कर दिए। यानी कि ग्रामर क्वेश्चन दिए गए नंबर 1, नंबर 2 लिखित कुछ क्वेश्चन दिए गए नंबर 2, नंबर 3 हिस्ट्री क्वेश्चन दिए गए। इस तरह से 3 प्रकार के क्वेश्चन उस दिन दिए गए, क्योंकि आज ये आखिरी दिन था। और उसके बाद मिस्टर हैमर हमेशा के लिए अलविदा हो जाते
और उसके बाद कभी नहीं उन्होंने आना था, क्योंकि अगले दिन से जर्मन लैंग्वेज शुरू हो जाती है उस स्कूल में, और जर्मन टीचर अगले दिन सुबह से आना था, और आज ही फ्रेंच लैंग्वेज ख़त्म थी। इसलिए ख़त्म होने के नाते फ्रेंच टीचर मिस्टर हैमल को आज ही जाना था। Describe about the classroom work. क्लासरूम वर्क मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया है। क्लासरूम वर्क, describe about the classroom work. Classroom work was started first of all from grammar, then after written work, and then after history. The question related to three of the category were also solved by the student in a proper way, and the student also did not face any problem while attempting these three type of category question. Number 8, describe the last scene. Describe the last scene. As soon as the history question was being solved by the student, then the student after some time also came in front of the class. They also sang about the song of thanks in the respect and honor of Mr. Hamel, as Mr. Hamel was leaving the school forever after completing 40 years of service as French teacher. Then after old Hosser also came in front of the class along with Primal book, and he also told to the student about Mr. Hamel, about giving the respect and honor to Mr. Hamel, and he also told about Mr. Hamel by seeing the book Primal. इसी टाइम पे चर्च in the meanwhile there came a sound of 12 o'clock and the time was over. Mr. Hamel also took a piece of chalk and he also came in front of the class. He also wrote on the blackboard, "While of hands, the class is dismissed herewith and you may go now, please." जैसे ही हिस्ट्री क्वेश्चन दिए जा रहे थे, हिस्ट्री क्वेश्चन describe the last lesson, जैसे ही हिस्ट्री क्वेश्चन दिए जा रहे थे, हिस्ट्री क्वेश्चन करने के बाद कुछ बच्चे आए क्लास के सामने। उन्होंने अपने देश की भाषा में कुछ गीत गाए, कुछ सॉन्ग, गीत और संगीत पेश किए मिस्टर हैमल के सम्मान में, क्योंकि वो आज 40 साल पूरा करके हमेशा के लिए विदा हो रहे थे। इसलिए उन्होंने कुछ गीत प्रस्तुत किए। उसके बाद ओल्ड होसल भी ट्राइबल बुक लेके आए। उन्होंने भी बुक से कुछ मिस्टर हैमल के बारे में कुछ बातें सुनाई, कुछ लाइन पढ़ी, कुछ कसीदे पढ़े उनके बारे में, क्योंकि उनका बहुत सारा लंबे समय बीत चुका था। 40 वर्ष का फ्रेंच टीचर के रूप में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते आज चूँकि उन्होंने जाना था, और अगले दिन सुबह से जर्मन टीचर ने आना था, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज अगले दिन सुबह से पढ़ाई जानी थी, क्योंकि ये लोकेशन अल्सेस के अंदर जा चुकी थी, और अल्सेस और लोरेन दोनों सिटी जर्मन आर्मी ने फ्रेंच आर्मी पर अटैक करके जीत लिए थे, यानी अपने कब्जे में ले लिए थे। और ये वजह थी फ्रेंच आर्मी के कमांडिंग अफसर की कमजोरी थी। इसके बाद में उसी टाइम पे चर्च से घंटा बजा, 12 बजे घंटे की आवाज़ आई, और मिस्टर हैमल चौक का पीस लेकर क्लास के सामने आए। उन्होंने बोर्ड पे लिखा, "While of hands, the class is dismissed herewith and you may go now, please." यानी आज फ्रेंच लैंग्वेज का खात्मा होता है, और द क्लास इज डिसमिस herewith, क्लास को भी डिसमिस किया जाता है, और अभी आप अपने घर जा सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इट वाज अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, द लास्ट लेसन रिलेटेड टू फ्लेमिंगो इंग्लिश 12।
before 3 days, I taught you the summary of the same chapter in Hindi as well as English. And today, I have taught you the question answers of the same chapter. For today, it was only. And in next video, I will meet you again for the next topic. Also subscribe the channel if you like. धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।